So the Prime Minister has been extremely aggressive on Pakistan state-sponsored radical Islamist terror. You heard his speeches there on the 12th of May, his speeches at multiple locations after Operation Sindoor. But the opposition wants to know, question number one, wasn't there an intelligence failure? Why wasn't Pahalgam terror attack prevented? Who's accountable for massive intelligence lapses? The second question that the opposition wants to know, casualties in operations, how many Indian fighter jets were downed? What losses did India suffer? The opposition wants to know, of course, as does Pakistan. Will the government disclose the full details of India's operational losses during Operation Sindoor? The opposition also wants to know ceasefire and mediation. On this aspect, Donald Trump, even before government of India declared that a ceasefire was in place, Donald Trump had already taken credit for it. And you heard Mallikarjun Kharge very clearly saying 25 times Donald Trump has reiterated he ensured a ceasefire. He used trade as a weapon. Clearly, with Pakistan, there is no trade. It's only with India did he use trade as a weapon. Why is the government silent on this? Also, the strategic outcomes. Did Operation Sindoor achieve its aims and objectives, or was it an absolute failure bringing Pakistan and China closer? You heard Manikam Tagore. Because on global diplomacy, the Congress charges it's an absolute failure, not just of Dr. Jaishankar, according to the Congress party as External Affairs Minister, but the Narendra Modi government's failure in diplomacy. India wasn't able to shape global narrative according to the Congress. No major nation, according to them, came out openly to hit out at Pakistan state-sponsored radical Islamist terror. And Pakistan and China, their support came into active combat. Let me now also get you the government's response before I bring in our guests on the special broadcast. The government concedes there was an operational failure, there were lapses when it came to security, and the Lieutenant Governor Manoj Sinha, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, he said it is his responsibility and he owns it. Casualties, government insists operational losses when it comes to fighter jets. Since Operation Sindoor is still on, sensitive military information will only benefit the adversary, and that is why information is not confirmed when the operation is still on. But why doesn't the government just say this in as many words to the opposition remains the big question. On the aspect of ceasefire and mediation, the government has said it's only after Pakistan's DGMO called up India's DGMO and pleaded after the May 10 bombing of Pakistani military bases that India agreed to a ceasefire on Pakistan's request. There was no foreign mediation. Government has denied Donald Trump called and spoke to Prime Minister Narendra Modi, and the government has said so in as many words. The strategic outcome, government it says all military objectives achieved. There's a reaction that's coming in. Let's quickly listen into what members of Parliament are saying. पाकिस्तान को जाता है वो किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो इस पे सवाल है। रही बात कितने जेट्स मिस हुए, क्या ऑपरेशन सिंदूर रहा, हर मंच पे मैंने यही कहा, मैं विपक्ष की नेता हूं, मैं सवाल जवाब जो करूंगी अपनी सरकार से वापस देश में जाकर करूंगी, पर देश के बाहर मैं देशवासी बनकर, इंडिया एम्बेसडर बनकर मैं आई हूं। तो सवाल यही है, सबसे पहला सवाल है कि इंटेलिजेंस फेलियर कहां से हुआ। दूसरा सवाल यह है कि जब जनरल आसिम मुनीर ने इतनी जहरीली भाषण दिया था, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था, और उसी का सिमिलर पैटर्न हमने उस टेरर अटैक में देखा जहां उनसे धर्म पूछकर उनकी जान ली गई। तीसरा कि अब तक वो आतंकवादी कहां हैं, और अगर हमारे सीडीएस कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा है, अगर सीडीएस ये कह रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी कि फिर हम ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, जब खुद प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने ये बात रखी है कि कोई भी बातचीत उनके साथ नहीं होगी। तो क्या कैबिनेट उनको कम दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिन्होंने इनको परमिशन दी होगी, क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप भी
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको एक डेलीगेशन का भाग बनाया था सरकार की तरफ से, और आप लोगों ने ये प्रमाण रखा भी है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ वही चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये जो आप बात कह रही हैं कि सरकार से सवाल पूछने की बात है देश के अंदर, बट लगातार ऐसी चीजें होती आ रही हैं। नहीं, सबसे पहले चिदम्बरम जी खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, और साथ ही साथ अगर प्रमाण की बात करें तो 70 साल के इतिहास में बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो क्योंकि मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, मैं बस ये बता रही हूँ कि 70 साल के देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रमाण देश को मिले हैं जहाँ पे पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है। मैं मुंबई से आती हूँ, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, बहुत साल लगे लीगल प्रोसीजर के माध्यम से तहावुर राणा को वापस देश में लाने को। हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान का लिंक दिखाने को कि किस तरीके से आतंकवादी हमलों में वो शामिल रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से द रेजिस्टेंस फ्रंट को अब आकर यूएस ने उनको एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर किया है, पर उनका पूरा बचाव पाकिस्तानी जिन्होंने पहले आकर